Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Saraswati Guru Narachana Prabhupada Ki Jai, Ananta Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namachari Haridas Thakur Ki Jai, Ranchika Hoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Vedi Gadara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Samakunda Radha Kunda Devi Govardhana Ki Jai, Vrindavan Dhamma Ki Jai, Mathura Dhamma Ki Jai, Navadvipa Dhamma Ki Jai, Gopramanandi Hari Hari Bol. Oh, glorious system of the devotees. Oh, glorious system of the devotees. Oh, glorious system of the devotees. Oh, glorious to Shri Guru and Granga. Oh, glorious to Srila Prabhupada, Savior of the whole world, to Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Guru. Srimati Bhakti Vedanta Swami Tirunam. Namaste Saraswati Devi. Gauravana Prachara. Neva Sisa Sarvada. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15, Text 44, by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
आवाज़ थोड़ी सी कम है प्रभु जी, और इंट्रोडक्शन पहले देना है प्रभु जी। युगल प्रेम प्रभु जी, माता जी का इंट्रोडक्शन पहले। हरे कृष्णा माता जी, Okay. आई नीड टू गिव यू इंट्रोडक्शन फर्स्ट। All right. सो सुरभि माता जी को आज हम अपने बीच पाके वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड। माता जी प्रभुपाद के डिसाइपल्स में से एक हैं, और माता जी श्रील प्रभुपाद की जो संकीर्तन मूवमेंट है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, और यूरोप में प्रीचिंग के दौरान माता जी का योगदान रहा। और 15 साल उन्होंने टेम्पल सेवा भी की है। माता जी बहुत अच्छे कुक हैं, और हेड कुक की तरह उन्होंने गोविंदास में सर्व किया है। सो अगर हमें गोविंदास के लिए कुछ टिप्स चाहिए तो हम माता जी से ले सकते हैं। और अपनी सेवाओं के द्वारा, अपनी कुकिंग के द्वारा माता जी ने कई भक्तों को प्रसन्न किया है। माता जी का स्वागत हम हरि बोल करके करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So we're going to do the Sanskrit. It's text 44, description of the kingdom of God. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 15वें अध्याय का 44 श्लोक, जिसका नाम है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। Teva amusya vadan asita padma pusham. देवा अमुष्य वदनासित पद्म कोश। Udvikshya sundara taradara kundan harsham. सुंदर तपरा कुंद महासम। Dabashisha puna aviksha tatyam anugrahi. लब्धाशिष पुनर्वेक्ष तदीयमंगे। Dvandakara manisvariyam yutitayu. द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रणयं निदद्यु। Prabhus, Repeat. देवामुष्य वदनासित पद्मकोश। मुदीक्ष सुन्दरतलाकुन्दहासम्। लब्धाशिष पुनरवेक्ष तदीयमंगे। द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रणयं निदद्यु। देवामुष्य वदनासित पद्मकोशा। देवामुष्य वदनासित पद्मकोश। मुद्रेक्ष कुन्दरतराधर कुन्दहासम्। मुद्रेक्ष सुन्दरतरकुन्दहासम्। लब्धातीश पुनरवेक्ष तदीयमङ्गी। लब्धाशिष पुनरवेक्ष तदीयमंगे। द्वन्द्वं नखारुणमणि चरणयं निदध्युः। द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रणयं निदद्यु। ladies, it's okay. देवामुष्य वदनासित पद्मकोश। मुद्रीक्ष सुन्दरतराधरकुन्दहासम्। लब्धाशिष पुनरवेक्ष तदीयमंगे। द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रणयं निदद्यु। Ladies, देवामुष्य वदनासित पद्मकोश। मुद्रीक्ष सुन्दरतराधरकुन्दहासम्। लब्धाशिष पुनरवेक्ष
द्वन्द्वं कारुणमैश्वर्यं निदध्यु। Anyone else? देवांशवदनासितपद्मकोश उदीर्य सुन्दरतरधरामन्दहासम् लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्गे द्वन्द्वं कारुणमैश्वर्यं निदध्यु। Thank you, very good. देवांशवदनासितपद्मकोश उद्दीश्य सुन्दरतरमन्दहासम् लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्गे द्वन्द्वं कारुणमैश्वर्यं निदध्यु। Take those sages. Why? Certainly. Amisha, the Supreme Personality of Godhead. Vandana, face. Asita, blue. Padma, lotus. Kusham, inside. Advikshya, after looking up. Sundaratara, more beautiful. Udhara, lips. Kunda, jasmine flower. Hasan, smiling. Labdha, achieved. Ashisha, aims of life. Puna, again. Aviksha, looking down. Tadyam, his. Agri, Dandvam, pair of lotus feet. Naka, nails. Aruna, red. Mani, rubies. Swayam, shelter. Nidajya, meditating. Translation by Srila Prabhupada. And we're going to read this translation. Then we're going on to text 45, where Prabhupada has a little bit of ginormous purport. So I'm just going to read a little bit of that, and then you can continue on maybe for a few days, because it's like that long. Okay? तो माता जी कह रही हैं कि हम ये श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अगला श्लोक पढ़ेंगे जिसमें प्रभुपाद ने लंबा पurport दिया है, और मैं उसमें से कुछ का वर्णन करूँगी, बाकी आप आगे की क्लास में उसका वर्णन सुन सकते हैं। The Lord's beautiful face appeared to them like the inside of a blue lotus, and the Lord's smile appeared to be a blossoming jasmine flower. After seeing the face of the Lord, the sages were fully satisfied, and when they wanted to see him further, they looked upon the nails of his lotus feet, which resembled rubies. Thus they viewed the Lord's transcendental body again and again, and so they finally achieved meditation on the Lord's personal feature. उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ, और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूलों सी प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतः संतुष्ट थे, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे, अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। So we're reading text 45.
This is a form of the Lord which is meditated upon by the followers of the yoga process, and it is pleasing to the yogis in meditation. It is not imaginary but factual. As proved by great yogis, the Lord is full in 8 kinds of achievement, but for others, these achievements are not possible in full perfection. यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं, और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए यह पूर्ण रूप में संभव नहीं है। Purport by Srila Prabhupada. The success of the yoga process is very nicely described here. It is specifically mentioned that the form of the Lord as 4-handed Narayan is an object of meditation for the followers of Yoga Marga. In the modern age, there are many so-called yogis who do not target their meditation on the 4-handed Narayan form. Some of them try to meditate on something impersonal or void, but that is not approved by the great yogis who follow the standard method. The real Yoga Marga process is to control the senses, sit in a solitary place and Shanchu place, and meditate on the 4-handed form of Narayan, decorated as described in this chapter as he appeared before the 4 sages. तो यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। यह विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य है। आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुज नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। उनमें से कुछ तो किसी निर्विशेष या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुज रूप का ध्यान करना है जो इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत रहता है और जिस रूप में वे चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुए थे। This Narayan form is Krishna's expansion. Therefore, the Krishna conscious movement, which is now spreading, is the real topmost process of yoga practice. Krishna consciousness is the highest yoga performance by trained devotional yogis. यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है, अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो अब विस्तार कर रहा है योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। कृष्ण भावनामृत जो प्रशिक्षित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग की संपन्नता है। Despite all the allurement of yoga practice, the 8 kinds of yogic perfections are hardly achievable by the common man. But here it is described that the Lord who appeared before the 4 sages is himself full of all 8 of those perfections. योगाभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद 8 प्रकार की योग सिद्धियां सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पाती हैं, किंतु यहाँ यह वर्णन किया गया है कि चारों मुनियों के समक्ष प्रकट होने वाले भगवान स्वयं सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण हैं। The highest yoga marga process is to concentrate the mind 24 hours a day on Krishna. This is called Krishna consciousness. The yoga system, as described in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, or as recommended in the Patanjali yoga process, is different from the nowadays practice Hatha yoga, as it is generally understood in the Western countries. सर्वोच्च योग मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को केंद्रित करना है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाती है। श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में वर्णित योग पद्धति या पतंजलि द्वारा संसूत योग पद्धति आजकल अभ्यास किए जाने वाले
हठ योग से भिन्न है, जैसा कि आजकल पाश्चात्य देशों में समझा जाता है। Real yoga practices is to control the senses, and after such control is established, to concentrate the mind on the Narayan form of Shri, the Supreme Personality of Godhead. असली योगा अभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप में एकाग्र करना है। So, we'll try that. You are very fortunate here in this temple that you have the most deities. आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके इस मंदिर में बहुत सुंदर, सबसे सुंदर भगवान के विग्रह हैं। I've seen them at Mataji and Prabhu's house. I cannot stop to look at them. मैंने उनको माताजी प्रभु जी के घर पर देखा है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी उनको देखते रहने से। Krishna has such a beautiful smile, is it not? भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट कितनी सुंदर है ना? It captivates you. ये आपको आकर्षित करती है। Next to him, the sweetest Radharani. और उनके बाद है जो सबसे सुंदर मुस्कान वाली राधा रानी। Isn't it, ladies? है ना माता जी लोग? Yeah. So you are so fortunate. I think there's lots of deities all over the world, and all of them are beautiful, but these really captivate me. माता जी कह रही है कि सब जगह भगवान की सुंदर विग्रह हैं पूरे संसार में, लेकिन आपके यहाँ की जो विग्रह है उन्होंने तो मेरा हृदय चुरा लिया। And when you are looking at Krishna, he's looking right at you with a big smile on his face. When you look at Krishna, when you look at Krishna, when you're looking at Krishna, he smiles right back at you with a big smile on his face, like as if you're doing okay. माता जी कह रही हैं जब आप कृष्ण की तरफ देखते हैं तो उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है जैसे कि वो कह रहे हो जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। So if you all can just look at the face of Radha Govinda, your life will be perfect. तो सिर्फ यदि आप राधा गोविंद के चेहरे को देखें आपका जीवन परफेक्ट है। Because you know, so many people, especially in the West, they're trying all these different yogas, hatha yogas, and all these things. Fortunately enough, we do make some devotees from the yoga. Maharaj has got one at Govardhana village in Australia. We have a Krishna village, and people come there as volunteers, and they camp there. Some stay a few days, some stay a week, some stay 2 months. Devotees. माता जी कह रही हैं कि हालांकि पाश्चात्य देशों में अलग अलग तरीके आत्म साक्षात्कार के लोग ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम कुछ लोगों को टीच करते हैं और अलग अलग वेस्ट में जो इको विलेज हैं या कृष्णा वैली है वहाँ पे लोग आते हैं। कुछ लोग 2 दिन रुकते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ता रुकते हैं और कुछ लोग रुक जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। And Srila Prabhupada, he's given us the most easiest process to become God conscious. I was reading yesterday how he said, you chant this Hare Krishna mantra and you follow the 4 regulated principles, and he always says, always remember Krishna and never forget him. So if you ever feel like that you're going a little bit off track, then come in here and look at that picture of Radha Govinda, and he'll touch your heart. And so your Krishna consciousness can become perfect. प्रभुपाद ने हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद ने हमें सबसे इजी प्रोसेस दिया है। प्रभुपाद ने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 4 नियम का पालन करो, और इस तरह से आप राधा गोविंद की पिक्चर के पास आइए, उनको देखिए और इस तरह से आपका आत्म साक्षात्कार का जीवन
ताकि आप कृष्ण को हमेशा याद रखो और उन्हें कभी ना भूलो और इस तरह से आपकी लाइफ परफेक्ट जाए। Isn't it? So, I was most fortunate actually when I got initiated by Srila Prabhupada in London in 1971. He gave me asked me the principles and how many rounds we should chant. And he said, Chini, your name is the name of the transcendental cow, the giver of abundance and Surabhi Devidasi. So, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। 1971 में मैं लंदन में प्रभुपाद से मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। प्रभुपाद ने मुझसे पूछा कि क्या 4 सिद्धांत हैं और कितनी माला का जप करूँगी, और मुझे उन्होंने मैं तुम्हें नाम देता हूँ जो दिव्य गाय का नाम है जो बहुत सारा दूध देती है, सुरभि। And I was quite shy in front of a crowd of people, which there was a very small temple room in Bury Place in London. And there was more than 50 people in there. And you had to get up, walk wherever you are sitting over to Srila Prabhupada to get him to give you his name. And he must have noticed that I was a little bit nervous. So, मेरा स्वभाव बहुत शर्मीला था, और जो उस समय के सेटअप था उसमें कमरा छोटा था, बहुत सारे लोग कमरे में बैठे थे और आपको प्रभुपाद तक आना होता था पूरा चलकर। तो जब मैं चलकर आ रही थी तो प्रभुपाद ने नोटिस किया कि मैं बहुत नर्वस थी। He said, don't be afraid. He said, if you follow this process, you'll go back home, back to Godhead at the end of your life. So, प्रभुपाद ने मुझसे कहा, डरो मत, अगर तुम इस प्रोसेस को फॉलो करोगी तो जीवन के अंत में तुम भगवत धाम जरूर जाओगी। So, this process is not difficult. It's not. Does anyone find it difficult? माता जी कह रही हैं ये जो प्रोसेस है ये बहुत कठिन नहीं है। किसी को यहाँ पे है जिसको कठिन लगता हो ये प्रोसेस? It's not difficult. Chanting, dancing, having lovely association with wonderful devotees that are like-minded. Right? It's very important. Listen to these lovely classes, to follow the principles, and to just be happy. Isn't it? Prabhupada said chant and be happy. माता जी कह रही है ये प्रोसेस कितना इजी है। आपको चैंटिंग करना है, डांस करना है, अच्छे भक्त हैं जो आपकी तरह का विचारधारा रखते हैं, लाइक माइंडेड है, उनका संग करना है और खुश होते हुए भगवत धाम जाना। And eat wonderful prasadam. और लास्ट में आपके पास तो इतना अच्छा प्रसाद है। Prabhupada said that prasadam is so important. He said, if it wasn't for prasadam, none of you would be here. प्रभुपाद कहते प्रसादम कितना जरूरी है, अगर प्रसादम नहीं होता तो आप में से कोई नहीं होता यहाँ। So that's so important when we're cooking for Krishna, because we cook not with tasting. We don't go and let me try to see if that's perfect. No, the cooking is all done with the consciousness. And if you keep your consciousness nice, if you're going to cook an offering for Krishna, whatever you're going to do for Krishna, prepare yourself. So that can be a lifelong rule. Lifelong Rule. So माता जी कह रही हैं भगवान के लिए हम जब कुकिंग करते हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। जब आप भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो आप उसे चख नहीं सकते, जूठा नहीं कर सकते। आप नहीं सोचते कि चलो मैं टेस्ट करके देखूँ कि बराबर है कि नहीं। भगवान के लिए जब आप कुकिंग करते हैं तो आपकी चेतना, जागृत चेतना में आपको उसको करना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट सेवा है कि आपको जीवन भर के लिए ये रूल बनाना है कि किस चेतना में हमें भगवान के लिए कुक करना है। So, the best way to do nice service, how do you think? The best way to do nice, the best. Which is the best way to do nice service? So माता जी आपसे पूछ रही हैं कि क्या तरीका है जिससे हम भगवान की बेस्ट सेवा कर सकते हैं, अच्छी सेवा कर सकते हैं? Yeah. Preaching. What? Preaching. No. Even before, because preaching is a service.
माता जी कह रही हैं कि किस तरह से सेवा कर सकते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं प्रीचिंग। माता जी कहते हैं प्रीचिंग से पहले भी कुछ और है जो आपको करना है। कंप्लीट सरेंडर। Yeah. It's really easy. Really easy. Chanting. अरे बोल। So, actually it doesn't matter which day it is, what service you're doing. When you get up in the morning, you have your shower, you get yourself ready, and what's the first thing you do? You grab your big bag, you make your obeisances to Prabhupada, and you start chanting. So, माता जी कह रही कोई भी दिन हो, आप सुबह नींद में से उठते हैं, सुबह जल्दी उठ के नहाते हैं, नहाने के बाद पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप दूध बैग ढूंढते हैं, आपको उस पर चैंटिंग करना है। And if you chant good rounds, you're going to cook good, you're going to sell books good, you're going to do daily worship nicely, you're going to make nice garlands, you're going to look after the family nice, because the consciousness is on a high level. अगर आप सुबह सुबह अच्छा जप कर लेते हैं तो फिर आप अच्छा जप करने के बाद आप कुकिंग भी अच्छा करेंगे, टीचिंग भी अच्छा करेंगे, घर का काम भी अच्छे से करेंगे, भगवान की सेवा भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपकी चेतना अच्छी है। So mostly nowadays I'm not really doing so much physical service in the temple. I'm more liking to encourage the devotees and I like meeting people and talking to people. One time the temple president in New Govardhan farm, he was standing next to Ramai Swami and he said, Ajita said to me, Surabhi, how would you like to become the pujari here on the farm? And I was just listening. And Ramai Swami said, no, Surabhi won't be a pujari. She's a people person. So माता जी कह रही हैं कि आजकल क्योंकि मेरा उम्र ऐसा हो गया है तो मैं बहुत फिजिकल सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आजकल लोगों से मिलती हूँ, उनको इंस्पायर करती हूँ। तो मैं न्यू गोवर्धन विलेज में थी, तो वहाँ पे महाराज ने किसी ने आके मुझसे पूछा कि माता जी यहाँ पे आप पुजारी की सेवा करना चाहेंगे? तो महाराज ने कहा नहीं, सुरभि पुजारी नहीं है, सुरभि इज लोगों से मिलने वाली, जिसको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उस तरह की व्यक्ति है। And actually just someone had done my astrology chart some years ago, but I hadn't really read it very deeply, and I was going through things. I had to, lessen my things, which I didn't. माता जी कह रही हैं कि किसी ने मेरी कुंडली बनाई थी कुछ साल पहले, और मैंने कभी इसको ठीक से पढ़ा ही नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले मैं उसको बहुत डीपली पढ़ रही थी तो मुझे कुछ पता चला। And that astrology was in a folder, and I thought, I should get it out and read it. I should get another. I should get it out and read it. हाँ, तो उन्होंने कहा जब कुंडली बनी हुई थी तो मैंने सोचा कि मेरे को इसको पढ़वाना चाहिए किसी से। And it said, this person, she will get on a train, a tram, a bus, and a plane, and she will make friends with the person next to her. उस कुंडली में लिखा था कि ये जो व्यक्ति है ये बस में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, ट्रेन में सफ़र करेगा, प्लेन में सफ़र करेगा, और जो उसके बाजू में बैठा होगा उसको दोस्त बना देगा। And it happens all the time. और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। So that I feel like that's my service, not only to people I meet, but devotees as well. They like to talk to me about my experiences and just encourage them in their Krishna consciousness. So यही मेरी सेवा है, क्योंकि भक्त मेरे से बात करना चाहते हैं, तो ये मेरी सेवा है कि मैं उनको अपनी सेवाओं के लिए और कृष्ण भावनामृत में प्रेरणा दूँ। And so I have adopted that I get up every day early and I chant my rounds as many as I can before Mangalarti. तो इसीलिए मैंने ये नियम बनाया
कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैं अपना जप करती हूँ सुबह, जितना हो सकता है। बंद हो गया सेल। जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह अपना जप करती हूँ मंगला आरती से पहले जितने राउंड्स हो सकते हैं। So now I meet many devotees and they ask me, will you give me or give us your blessing? So बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और मुझे पूछते हैं कि क्या आप हमें अपनी कृपा देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। So I pat them on the head. मैं उनके सर पे हाथ रखती हूँ। And I say, if I bless you, then you may get up before Mangalarti. अरे वो और उन्हें आशीर्वाद देके बोलती हूँ कि आप मंगला आरती से पहले उठेंगे, आशीर्वाद देती हूँ मैं। And chant some rounds. और सुबह उठ के कुछ जप करें। And they will be the best ones. क्योंकि यही सबसे अच्छी ब्लेसिंग है। And when I was in Mayapur recently, I experienced something very nice. I was in the little grocery shop in the Grihastha area past Australia. So माताजी कह रही हैं कि इस बार जब मैं मायापुर में थी तो मुझे एक अनोखा अनुभव हुआ। मैं जो गृहस्थाश्रम के फ्लैट है मायापुर में, उसके पास में ग्रोसरी शॉप में थी। And this one devotee, he said, is your name Mother Surabhi? And I said, yes. He said, you were in Kazakhstan. You are in? You came to Kazakhstan. And I said, yes. So किसी ने मुझे आके बोला कि आप माता सुरभि हैं? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला क्या आप कजाकिस्तान आए थे? मैंने बोला हाँ। And he said, ever since you came there, and you told us about getting up before Mangalarti and chanting rounds, he said, I'm a pujari and I have so much service and I was having so much difficulty with my rounds. And he said, since that day, I have got up early and chanted my whole 16 rounds before Mangalarti, and now my service is much easier. So माताजी कह रही कि उन्होंने कहा कि जब आप वहाँ आए थे तब आपने हमें बताया था कि सुबह जल्दी उठने के बारे में, और मैं एक पुजारी हूँ, मेरी बहुत सारी सेवाएं रहती हैं और मैं हमेशा ओवरबर्डन रहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने बोला था सुबह उठने के लिए तो मैं मंगला आरती से पहले उठ के अपने 16 माला कर लेता हूँ और अब मेरी सारी सेवाएं मेरे लिए बहुत आसान हो गई हैं। And I said to him, you don't know how much that means, because you go around and you talk to devotees and they ask you their some advice and that, but the perfection of giving that advice or encouraging them is that hearing from them that they are doing what you suggested. So माताजी ने उनसे कहा कि जो आपने कहा आपको पता नहीं मेरे लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जाते हैं, अलग अलग जगह पे हम सलाह देते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, लेकिन उस सलाह देने का परफेक्शन तभी है जब कोई व्यक्ति उनमें से जिन्होंने उसे फॉलो किया है वो आपको आके बताए कि उसके जीवन में उसका क्या प्रभाव रहा। So I'm just encouraging you all, give it a try. It's amazing. माताजी कह रही मैं आप सबको भी ये सलाह दे रही हूँ कि इसको एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत अद्भुत है। The saying, they say, one step towards Krishna, he takes 10 towards you. ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक स्टेप कृष्ण की ओर बढ़ाओ तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। So if you make that effort, he will encourage you, and all the little problems in your Krishna consciousness won't be so important anymore. तो यदि आप इसको एक ट्राई देंगे, भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो भगवान भी आपको इनकरेज करेंगे और आपके कृष्ण भावना में जीवन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सब गायब हो जाएंगी। There's one nice story from Bhaktisiddhanta Saraswati. But this man came and he said, Maharaj, I want to ask you a question. And he said, I'm very busy right now, but we have a shortage of devotees helping in the kitchen today.
could you go and help them? And I promise you that I will answer your question. एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा है, एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने बोला कि महाराज मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। तो महाराज ने बोला हाँ मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आज भक्त बहुत कम हैं, तो क्या प्लीज तुम किचन में जाके कुछ पहले सेवा करके आओगे? And he came back the next day and he said, Maharaj, do you mind if I can answer a question? I can ask that question to you. The devotee said. The next day. नेक्स्ट डे। तो दूसरे दिन जब वो आया तो उसने बोला कि महाराज मैं आपसे वो प्रश्न पूछूं अगर आपको बुरा ना लगे तो। And Maharaj said, look, unfortunately the same thing happened today. We have a shortage in the kitchen. तो महाराज कहते दुर्भाग्य से एक्चुअली वही प्रॉब्लम आज भी है जो कल थी, तुम थोड़ा किचन में जाके आज मदद करोगे? And then the person who was walking past Maharaj said, oh come now, I can answer your question. So जब महाराज ने उस व्यक्ति को चलते हुए देखा कहीं आसपास में, तो महाराज बोला अच्छा आ जाओ, आज मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। And the young man said, oh it doesn't matter Maharaj, while I was doing the service, the answer came to me. उसने कहा महाराज की जरूरत नहीं है क्योंकि सेवा करते समय जो प्रश्न था उसका उत्तर मुझे मिल गया। So that's what it's like. You take one step towards Krishna, he takes 10 towards you. So because he sees that you're making the effort, then he will help you in all ways. So if you can, it's just a matter of having a routine. Okay, every day I'm going to go to sleep at this time. So माता जी कह रही है कि कृष्ण का स्वभाव है, जब आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हैं तो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। जब आप देखेंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं तो वो आपकी मदद करेंगे। ये वास्तव में सिर्फ रूटीन की बात है, आपको ये फिक्स करना है कि इतने बजे तक मैं सो ही जाऊंगा। So then you calculate, I'm going to sleep at 8 o'clock, then in 6 hours I will get up, 2 o'clock. Or 7, you go to sleep at 9 o'clock, in 6 hours it's 3 o'clock. So माता जी कह रही हैं यदि आप ये फिक्स कर लें कि मैं 8 बजे सो जाऊंगा तो उसके 6 घंटे के बाद आप उठ सकते हैं, या आप सोचें मैं 9 बजे सो जाऊंगा तो 6 घंटे में 3 बजे तक आप उठ सकते हैं। Something will always come, the Mataji's are always trying to get me. You want some more prasad? You want to have some hot milk? तो माता जी कुछ ना कुछ होता भी रहेगा, जैसे माता जी मेरे पास आती बार बार आप प्रसाद देंगे, आप थोड़ा सा दूध लेंगे। I say no, I need to go to sleep now, isn't it? माता जी कहती मैं बोलती नहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं अभी सोने जा रही हूँ। And so I'm able to keep my routine. और इस तरह से मैं अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ। So it's all about practice. ये अभ्यास की बात है and determination. और दृढ़ता की। And if you try this, then you'll find the whole Krishna consciousness will change. और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको लगेगा कि पूरी कृष्ण भावना में आपकी बदल गई है। And just like Prabhupada said, that Krishna is so beautiful, just by seeing him, you will get inspired, and Krishna will, if you are on a very good consciousness, he reveals things to you. You know, you think, that's happening right now, and then just that moment, he will say, that's the answer to that question, or this is the way you can do this. He will show you. माता जी कह रही थी कृष्ण भावना में कितनी अद्भुत है, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप भगवान को देख सकते हैं, भगवान कितने सुंदर है। तो जब आप भगवान के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान अंदर से आपको रिवील करते हैं चीज़ों को, आपको समझ में आता है कि हाँ इस सवाल का जवाब ये है और इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरह से भगवान अंदर से आपको रिवील करेंगे। And the most important thing, Prabhupada said, I have given you everything. Now you just continue on, but don't change anything.
प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने आपको सब कुछ दिया है, जैसा मैंने दिया है उसको करते रहो, बस इतना ही है कि कुछ भी बदलो मत। Then our life will be perfect. और इस तरह से आपका जीवन परफेक्ट है। Yeah. And I'm going to ask you a question. What do you think is one of the biggest changes in our movement? One of the? What do you think is one of the biggest changes in our movement? माता जी कह रही, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारे आंदोलन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? Anyone knows? You're not answering the question, so I'm going to get you to do something. I want you to all say the Maha Mantra just like you do in Japa. मैं चाहती हूँ कि आप सब महामंत्र को उस तरह से बोलिए जिस तरह से आप जप के समय बोलते हैं। So I ask you a question. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perfect. Srila Prabhupada sings it like that. So why, when you sing kirtan, you say everything else? You don't go Hare Krishna, you go Krishna, you go Krishna, huh? And you go Ramo, Ramo, Rama. Is that the mantra? माता जी कह रही हैं कि हाँ ये परफेक्ट है, जैसा आपने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन फिर कभी कभी उसके प्रोनाउंसिएशन में हम मिस्टेक कर देते हैं, कृष्णा को कृष्णो कर देते हैं, रामा को रामो कर देते हैं। तो क्या ये है महामंत्र? Is that the Maha Mantra that Prabhupada taught us? क्या ये वो महामंत्र जो प्रभुपाद ने? So you think we're really making advancement by doing that? आपको लगता है कि हम सचमुच प्रगति कर रहे हैं पर हम कर नहीं रहे हैं? No. You know what Prabhupada said about it? Prabhupada said to my godbrother, he said, who is this Hare Rama? We do not know any Hare Rama. And he said, and I experienced this, why he said it. He said, are you trying to destroy this movement? And when you first hear that, you think, how? But then one day, I was at the Sunday feast in Australia, in Brisbane, and it was on the first level, and you come down the stairs, and the lady was standing on the side, and she said, please, can I ask you a question? So Mataji कह रही हैं कि एक बार मेरे गॉड ब्रदर को प्रभुपाद ने कहा कि ये हरे रामो कौन है, हम इसको नहीं जानते, कौन है ये, और क्या तुम इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हो? तो मुझे लगा प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये अनुभव हुआ जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। हमारा जो टेम्पल है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और फर्स्ट फ्लोर से जब मैं नीचे उतर रही थी तो मुझे एक स्त्री मिली और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? And that lady, she asked the question to me, please, can you tell me which mantra is right? The one that we all know, or this new one? So माता जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही मंत्र कौन सा है, वो जो हमें मिला था या जो आजकल ये नया चल रहा है? This new one. ये नया वाला। And I said to her, the one you know. मैंने उनसे कहा कि जो तुम्हें पहले से पता है। So then, from that experience, I knew what Prabhupada meant. और उस अनुभव से मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते थे। Because if we change this Hare Krishna mantra, we're not going to connect with Krishna. Because that mantra is not the mantra. क्योंकि जो ये मंत्र हम ठीक से चैंट नहीं करेंगे तो हम भगवान से संबंध नहीं बना पाएंगे,
क्योंकि ये वो मंत्र नहीं है जो हमें दिया गया है। So I want you all to take this very seriously. Many places I go, as soon as I hear what they're singing, I have to tell you. So मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे गंभीरता से लें। मैं कई मंदिरों में जाती हूँ, मैं उसे सुनती हूँ और मुझे उनको बताना ही पड़ता है। So please just sing the mantra properly. Just like if you pick up Prabhupada's books and you will sing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Prabhupada has written over 60 volumes of books. And not one time did he change the mantra. No? So प्रभुपाद ने जो मंत्र दिया है उसी को चैंट करें। आप प्रभुपाद की किताबों को उठाएंगे, पढ़ेंगे तो सब जगह प्रभुपाद ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र दिया है। प्रभुपाद ने 60 वॉल्यूम बुक लिखी है और कहीं पे भी प्रभुपाद ने मंत्र को नहीं बदला है। So when we are singing all these other things, who are we singing for? Are we singing for Krishna? Are we? No. When we're singing the mantra some other way than what you repeated with a japa, right? Then that means we are singing for ourselves. Because Krishna's name is not Krishna. It's not Krishna. It's not Ramo. And it's not Rama. So who are we singing for? तो जब आप इस तरह से मंत्र को गाते हैं तो आप किसके लिए गा रहे हैं? क्या आप कृष्ण की खुशी के लिए गा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें कृष्ण का नाम तो है ही नहीं। तो जब आप कुछ और तरह से गाते हैं, कृष्ण नहीं कृष्णो बोलते हैं या रामा बोलते हैं, तो वास्तव में वो आप भगवान के लिए नहीं गा रहे हैं, वो आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए गा रहे हैं। So we have to be very careful. It's become a little bit like a plague in our movement. Even I experienced in Ujjain, the devotee was singing Hare Krishna, Hare Rama, but the person who was repeating, he was singing something else. So माता जी कह रही हैं कि ये जो बीमारी है ना, प्लेग की तरह हमारे आंदोलन में फैल रही है, इसलिए बहुत ध्यान रखिए। माता जी कह रही मैं उज्जैन में भी गई थी तो वहाँ पे कीर्तन में सुन रही थी, जो भक्त है वो हरे कृष्ण हरे राम ही बोल रहा था, लेकिन जो रिपीट करने वाला था वो कुछ और ही गा रहा था। So it's our duty as devotees. We should sing it properly, and we should also tell anyone else that's not singing it properly, please sing the mantra properly. तो भक्त होने के कारण हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम ठीक प्रकार से मंत्र को गाएं और दूसरों को भी समझाएं कि किस तरह से ठीक प्रकार से मंत्र को गाना है। And if the person says, but I thought that was the mantra, I heard it in the temple here. कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इस मंत्र को मंदिर में ऐसे ही सुना है। But when Prabhupada was here, I never heard it. Never one time I ever heard that, or even for many years after. Maybe the last 25 years it's crept in. लेकिन माता जी कह रही कि जब प्रभुपाद थे तब मैंने इस तरह से मंत्र को कभी नहीं सुना। यहाँ तक कि प्रभुपाद के जाने के कुछ साल के बाद भी इस तरह का कोई नहीं हुआ, लेकिन कुछ 20-25 सालों से मैं देख रही हूँ कि ये सब चीज़ें आ रही हैं। So we've got a big job ahead of us to try to get everyone to sing the mantra properly. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आगे आने वाले समय में जो भी आ रहा है हम उनको मंत्र को ठीक प्रकार से चेंज करें। Can you help? क्या आप ये इसमें मदद कर सकते हैं? To tell everyone for Prabhupada. You have to do it for Prabhupada. प्रभुपाद के लिए हम दूसरों को ये समझा सकते हैं कि मंत्र को किस तरह से गाना है। When I'm on the Harinam, if anyone sings that, I go, no. We don't sing that on this Harinam. तो जब मैं हरि नाम पे जाती हूँ और अगर कोई गलत तरीके से बोलता है तो मैं उसे रोकती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, इस तरह से हम हरि नाम को नहीं गाते। And Krishna
just like the lady, Krishna sends people along to remind us, to tell us. We were on the Harinam and someone was singing it, and the man came up beside and he said, chant the mantra properly. He wasn't a devotee. Maybe sometime before he was a devotee. But Krishna sent him to tell us to chant the mantra properly. माता जी कहती है जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं, वैसे भगवान का नाम भी सब कुछ सेंस करता है और कई बार आपको इंस्ट्रक्ट करता है। तो मैं जब हरिनाम पे एक बार जा रही थी तो एक व्यक्ति ने मुझे आके बोला कि मंत्र को ठीक प्रकार से बोलो। वो तो भक्त भी नहीं था, शायद कभी भक्त रहा होगा, उसने मंत्र सुना होगा, लेकिन भगवान ने उसके थ्रू मेरे पास मैसेज भेजा कि मंत्र को ठीक से बोलो। When we were on the Parakram in Mayapur this year, many devotees were singing this Hare Rama, Radha, and a group of young men, and they must have came to Mayapur by themselves, you know, and they were on the Parakram this day, and they were all singing Hare Krishna Hare perfectly, just perfect. And it was such a great example to all the others. I don't know if anyone took it seriously, but I heard them. I went up and I said, thank you. So, माता जी कह रही कि इस बार जब मैं मायापुर में परिक्रमा पे थी तो वहाँ पे जो भक्तों का समूह था वो कीर्तन करता हुआ जा रहा था और वो ऐसे ही रामो और कृष्णों करके वो कीर्तन कर रहे थे। तो वहाँ पे एक यंग डिवोटीज का ग्रुप आया था जो अपने हिसाब से आया था ऐसे ही, और वो कीर्तन कर रहा था एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल था उन लोगों के लिए जो ठीक से कीर्तन नहीं कर रहे थे। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसको सीरियसली लिया, लेकिन मैं बहुत इंस्पायर हुई और मैंने बोला वेरी नाइस, परफेक्ट। And some places they will kind of make, you know, I say them about it, but they don't take it seriously. So one day on the New Govardhan farm, I think it was last year, Mukunda Maharaj, who's the first devotee in ISKCON, I grabbed the opportunity to tell him what I've told you about the lady and the man, and I said, you know, I feel like Krishna's sending these people along to remind us what we should be doing. And I said, what do you think about that, Maharaj, about the devotees singing this Ramo and everything like that? And he said to me, I think you are right. तो माता जी कह रही हैं कि पिछली बार जब मैं पिछले साल गोवर्धन इको विलेज गई थी तो वहाँ पे मुकुंद महाराज मुझे दिखे और मुझे लगा यही अच्छा अवसर है कि मैं उनको बताऊं। तो मैंने उनको ये सब बताया कि एक लेडी ने आके मुझे ऐसा बोला और इस तरह से सब लोग मंत्र को ऐसे रामो या कृष्णों करके गाते हैं। तो महाराज आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि भगवान किसी न किसी के द्वारा हमें ये याद दिला रहे हैं, हमें करेक्ट कर रहे हैं भगवान। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? तो मुकुंद महाराज ने कहा मैं सोचता हूँ तुम बिल्कुल सही हो। And so if I ever had maybe a little bit of a doubt, because so many, you get that even in the process of trying to spread this Krishna consciousness, people will come and they try to make you feel what you're doing is not right, you know. But when Maharaj did that, any feeling that maybe what they're saying, you know, like that, and he said, I think you're right. And that just completely concreted that I should do this. I told Madhava Prabhu, the one who sings very nicely, he doesn't sing it. And he told me, Mataji, you tell everyone not to sing it. So whenever I go to temples, I hear them singing it, I tell them, please don't sing that. Because we are doing this for Prabhupada. तो माता जी कह रही हैं कि मुकुंद महाराज ने जब मुझसे कहा कि तुम ठीक हो, तो मुझे लगा कि ये बात एक तरह से स्थापित हो जाती है कि हमें मंत्र को ठीक प्रकार से बोलना चाहिए
माता जी कह रही हैं कि माधव प्रभु जी जब गाते हैं तो लोग उसको अलग अलग तरह से गाते हैं। तो मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मंदिर में आते हैं तो आप सुनिए और जो इस तरह से गाता है उसको आप बोलिए। तो बोले मैंने सोचा कि ये जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्योंकि महाराज ने भी कहा। तो जब माधव प्रभु गाते हैं तो जो लोग रिपीट करते हैं मैं उसको सुनती हूँ, और अगर वो ठीक से नहीं गाते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ। Yes, and we don't know Krishna. We know Srila Prabhupada, isn't it? Because without Srila Prabhupada, we wouldn't know Krishna. तो माता जी कह रही हैं कि हम कृष्ण को नहीं जानते, हम श्रील प्रभुपाद को जानते हैं, और श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम उनके बिना कृष्ण को नहीं जान सकते थे। When I was a very young girl, 13 I think, I was going to the Sunday school at the church. Every Sunday I would go there. माता जी कह रही जब मैं 13 साल की थी, छोटी लड़की थी, तब मैं हर रविवार को संडे स्कूल होता था चर्च में, उसमें जाया करती थी। And I had this question, and I said to the Sunday school teacher, what does God look like? तो ये मेरे मन में एक प्रश्न था, और मैंने अपने संडे स्कूल की टीचर से पूछा, भगवान कैसे दिखते हैं? And he said, you don't ask questions like that. और उन्होंने कहा कि आपको इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। So I went home and I thought, if there's a question, there must be an answer. और मैं घर आई और मैंने ये विचार किया, अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जरूर होगा। So I never went back again. इसलिए मैं दोबारा कभी गई ही नहीं। So that was, and not till 8 years later did I get the answer to that question. और उसके 8 वर्ष के बाद मुझे इसका उत्तर मिला। And who do you think gave me that answer? तो क्या लगता है आपको, इसका उत्तर मुझे किसने दिया होगा? Prabhupada's devotees. प्रभुपाद के भक्तों। And I have always, when there's a beautiful picture of Krishna, I always just go, I love Krishna because he's so beautiful. So मेरे पास हमेशा कृष्ण का एक फोटो रहता था, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भगवान को बहुत प्रेम करती हूँ क्योंकि वो कितने सुंदर दिखते हैं। So for devotees, Krishna has to be beautiful. इसीलिए भक्तों के लिए भगवान सुंदर होने ही चाहिए। So one time I went to find a bead bag in Mayapur, and they had the bead bags with the stitching Krishna's picture. एक दिन मायापुर में मुझे एक बीड बैग मिला, तो बीड बैग के ऊपर वो कृष्ण की बहुत सुंदर फोटो लगी रहती है। And I don't know if you've noticed, some of them are very strange. कभी आपने शायद नोटिस किया हो, उसमें कभी कभी पिक्चर बहुत अजीब सी होती है। So I said to the man who's selling it, I said, who is that? तो जो व्यक्ति उसे बेच रहा था, मैंने उससे पूछा ये कौन है? And he said, Krishna. I said, no, it's not. Krishna is beautiful. And you have one eye up here and one eye down there, and it doesn't even look like Krishna. मैंने बोला नहीं, ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बहुत सुंदर है, और देखो इसने कृष्ण को कैसा बनाया, एक आंख इस तरफ से ऊपर है, दूसरी आंख नीचे है, ये तो बिल्कुल सुंदर भी नहीं लग रहा है। So Krishna has to be beautiful. तो भगवान सुंदर होने ही चाहिए। And he's so attractive. Our Krishna at Prabhuji's house, Radha Govinda, Yes. just so beautiful. So कृष्ण इतने आकर्षक हैं, प्रभु जी के घर पे जो राधा गोविंद जी हैं बहुत सुंदर हैं। Have you got a photo? Everyone has a photo? Yes. They all? We have, अच्छा everybody. माता जी पूछ रही सबके पास उनकी फोटो है? Everyone? All of you? You have a photo of Radha Govinda? क्या आप सबके पास राधा गोविंद की फोटो है? You should keep it in your pocket. Pull it out and just look at it. आपको अपनी जेब में उसको रखना चाहिए और बीच बीच में निकाल के उसको देखना चाहिए। Always remember Krishna and never forget him.
हमेशा कृष्ण को याद रखिए और उन्हें कभी मत भूलिए। I'm not used to giving class because people don't let ladies give class. So I often give talks to the ladies. Yeah, so I'm not very expert, but I hope I did okay. माता जी कह रही है कि मैं क्लास नहीं देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में स्त्रियों को क्लास देने के लिए नहीं बोला जाता है। ज़्यादातर मैं स्त्रियों के साथ में बात करती हूँ, उनसे क्लास देती हूँ, तो मुझे इसका अनुभव नहीं है ज़्यादा, पर मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक क्लास दी है। So, what time is it? How long does the class go? माता जी पूछिए कितने समय तक क्लास चलेगी? Does anyone have any questions? किसी का कोई प्रश्न है? Yeah? As you mentioned, pronunciation is more important. Sometimes we hear from devotees that bhav is more important than pronunciation. You have to speak a little louder. Mataji, as you mentioned that pronunciation is more important, but sometimes we hear from devotees that bhav is more important than pronunciation. How come? How are you going to achieve the bhav if you cannot say Krishna's name properly? So, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मंत्र का उच्चारण बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने भक्तों से सुना है कि भाव उच्चारण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो माता जी कह रही हैं कि उच्चारण ठीक नहीं करोगे तो भाव आएगा कहाँ से? In some countries like China, then when they first became devotees, they used to say Krishna like that. But then I asked the Chinese devotees who representing the Chinese, and I said, how are the Chinese devotees going with the pronunciation? She said, oh, they can say it. They can say Krishna. Practice. They can all say Krishna. So there's no excuse for India. You can go out with Krishna. So माता जी कह रही है कि चाइना के जो भक्त हैं वो कृष्ण ठीक से नहीं बोल पाते, तो इसलिए मैंने एक बार वहाँ के जो लीडर थे, प्रतिनिधि थे, उनसे मैंने पूछा कि कैसा चैंटिंग चल रहा है, भक्त ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला हाँ, अभी वो ठीक से कृष्णा बोल रहे हैं, ये अभ्यास की बात है, और आप तो भारतीय हैं, आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। I think also some of the Indian people, they would think, what are they singing? Because everyone knows Krishna, isn't it? In the Indian people. And so when you sing Krishna, they must think that's very strange. So भारत में तो सब लोग कृष्ण को जानते हैं, तो अगर आप ठीक से उसको उच्चारण नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे क्या गा रहे हैं, क्योंकि उनको तो कृष्ण के बारे में पता है। They must think, what are they saying? वो सोच सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं। Yeah, everyone knows Krishna. Have you many Indian people say Krishna is Krishna? क्या आपने कभी किसी भारतीय लोगों में किसी को बोलते हुए सुना है कृष्ण को कृष्णो? We are responsible for that. ISKCON. हम उसके लिए change the mantra. हम वाले इसके लिए उत्तरदायी हैं, इस मंत्र को बदलने के लिए। So we have a big job to repair it, and if we really want to please Srila Prabhupada, we have to repair it. You have to make the mantra properly, because you don't want to come at the end of your life and there's back to Godhead or back down again. And if we say, keep on singing this Hari Rama, Krishna Rama's going to say, I don't know what you were singing, but you weren't singing it properly. So maybe you've got to go back and learn it properly. So you don't want that. No? You want to sing at the time of your death when you're just about on
the last end you're going to sing Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama. Please help me to remember you. So माता जी कह रही है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको किस प्रकार से रिपेयर करते हैं, क्योंकि जब आप मृत्युशैया पर होंगे और आप कृष्ण और राम बोलेंगे तो राम बोलेंगे मुझे नहीं पता तुम किसको बुला रहे हो, किसके बारे में बात कर रही हो। तो फिर आप भगवत धाम जाने की बजाय वापस यहाँ आएंगे, भगवान बोलेंगे जाओ ठीक प्रकार से मंत्र सीख कर आओ। तो अपने आप अपने लिए ये गलती मत कीजिए। हमारा प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर होना चाहिए कि मृत्यु की शैया पर हमारे मुख से भगवान का नाम क्लियर निकले, कृष्ण कृष्ण राम राम क्लियर निकलना चाहिए सामने। जैसे आपने बताया कि व्यक्तिगत रूप से हम जब करते हैं तब तो हम सही उच्चारण करना चाहिए, परंतु हम सामूहिक रूप से संकीर्तन करते हैं तब तो एक राग निकलती है ऑटोमेटिकली कि हरे कृष्णा को बोला ही जाता है, तो वो भी गलत होता है। So Mataji, he is saying that when we chant individually, we chant our japa, that time we can check our pronunciation. But when we do Sankirtan, they sing in a very different tunes, different melodies. So that time they pronounce some words wrong, Rama. Yeah. So is that we should take care in Sankirtan also? Yes, especially because the world is hearing it. Just like the lady said, which mantra is properly, and the lady said, which mantra is right, and then the man said, chant the mantra properly. So it's very important. So Mataji कह रही है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम हरिनाम करते हैं तो हमें प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया हमें सुन रही है। और माताजी कह रही है जैसे मुझे उस स्त्री ने आके पूछा कि कौन सा वाला मंत्र सही है, या उस व्यक्ति ने आके मुझे बोला कि मंत्र को ठीक प्रकार से जपो, तो इसलिए बहुत आवश्यक है स्पेशली कि संकीर्तन के समय हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। It's our duty as devotees to chant the mantra properly. If the devotees are hearing it, and the devotees are not singing it properly, you have to tell them, no, that's not the mantra. That's not the mantra. तो ये भक्तों का उत्तरदायित्व है, अगर आप किसी को गाते हुए सुन रहे हैं और आपको लगता है कि वो ठीक प्रकार से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है, तो आपको उसको बताना चाहिए कि ये मंत्र नहीं है। Yeah. Very, very, very important. When I went to Govardhaneka village, I told them in the morning, please don't sing this. By Prabhupada, they were singing perfectly. So quick. And it's just, okay, that's not the mantra, this is the mantra, and we sing it. And let the other one go. समाधि जी करी मैं गोवर्धन को विलेज में थी, जब मैं सुबह वहाँ पे सुना तो मुझे लगा वो ठीक से नहीं गा रहे, मैंने उनको उसके लिए टोका। प्रभुपाद आरती के बाद जब उन्होंने गाया तो एकदम ठीक गाया, तो इतना तुरंत उसका असर आ गया कि बस उन्होंने ठीक कर दिया। उन्होंने बोला हाँ ये मंत्र ठीक नहीं है, इसको इस प्रकार से गाएंगे। Mataji, in Indians they used to say Krishna, but in ISKCON we Krishna. Krishna, yeah. And but Indians say like Krishna. And Yeah, but Krishna that's not is so extreme as Krishna, no? Or Krishna, they say, more. That's not so extreme. But to change it, that's just a tiny Krishna like that. They're still saying Krishna. They're not saying Krishna, Krishna. Like there's more. Even one devotee in Mayapur, he was singing Prabhupada, Prabhupada, I'm going, oh my God, get him straight again. Yeah. So we work together. We're all devotees. We all want to serve Srila Prabhupada nicely. So we have to keep everything perfect. He said, don't change anything. Don't change anything. So, let's do it. Okay. ट्रांसलेशन की जरूरत है, यहाँ सुन लिया सबने? सुन लिया ना? One more.
Rama. Rama. Simple. You want to listen to Prabhupada. You get the kirtans before the Prabhupada left this world. You will listen to them. They're all Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We never sing those things. No. But you have an artist will always try to creep in. And if you let it, it can become a big thing, isn't it? Maya can create a big thing if we let it. If you let your guard down, right? Oh, look, I have so much service to do, I don't really have time to chant my rounds. In the notion of time, you're not chanting your rounds. If you just let these things creep in, so because it's crept in, it's become a big thing. You know, anywhere you go, even in the world, you'll hear devotees singing that. You know, so you've got to nip it in the bud. When a child is naughty and he keeps doing the same thing, tap him. Enough. You're falling asleep all the time. If you don't put a little child back on track in the beginning, he's going to keep this bad habit for the rest of his life. But when he's small, and you say to him, no, this is not the way we do it. We do it like that. So, actually, no one really has made a very strong effort to change this. But there's a few devotees, not only me, there's a few. And it's going to take time, but if we really make an effort, then we'll get back on track. Because we don't only want to go back to Godhead ourselves, we also want to take many people back to God, the rest of the world if we could. But yes, do that. That's the most important thing, most potent thing is the chanting, isn't it? Yes. And if you're falling asleep, stand up. Okay, Hare Krishna. Thank you. All right? Hare Krishna. When I come next time, I'll be listening.